First question, the formula of an ionic compound containing a metal ion M plus 3 and a non-metal ion X minus 1 is. Steps for writing chemical formula. Symbols of two elements are written side by side in the order of positive ion first and negative ion later. The valency of each ion is written on the right top corner of its symbol. पहले हम पॉजिटिव आयन लिखेंगे फिर नेगेटिव आयन और उनकी वैलेंसीज राइट टॉप कॉर्नर पर. The valency of each ion is brought to the lower right corner of other ion by cross exchange method. मीन्स वैलेंसीज को हम क्रॉस एक्सचेंज करेंगे. m की वैलेंसी हम x के साथ लिखेंगे और x की वैलेंसी m के साथ. साइंस को निग्लेक्ट करेंगे, माइनस प्लस साइंस नहीं लिखेंगे, सिर्फ वैलेंसीज एक्सचेंज होगी. मीन्स m1 x3. mx3 means option C, mx3 is the correct answer. Next question, which of the following is not an empirical formula? As you know, empirical formula is the simplest whole number ratio of atoms present in a compound. Option A simplest ratio को represent कर रहा है. Option B भी simplest whole number ratio को represent कर रहा है. Option D भी simplest whole number ratio को represent कर रहा है, जिनको हम further simplify नहीं कर सकते. Except option C, जो further simplify हो सकता है. It can be further simplified to simplest whole number ratio, that is CH2N. Means option C, C2H4N2 is the correct answer. Next question, a sample of hydrocarbon undergoes complete combustion to produce carbon dioxide, CO2 and water H2O. If 8.80 gram of carbon dioxide is obtained, then what will be the mass of carbon present in it? नोट में हमें एटॉमिक मास गिवन है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, बट मैं 2 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रही हूँ. फिर भी आपको जो मेथड इजी लगे आप वो फॉलो करो, या जो आपके टीचर्स बोले आप वो मेथड फॉलो करना. सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स है. एटॉमिक मासेस हमें गिवन है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16. 1 into 12 is equals to 12, 2 into 16 is equals to 32, 12 plus 32 is equals to 44. मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है 44. 44 grams of carbon dioxide contain 12 gram carbon. और हमें क्या गिवन है, 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिली है और उसमें हमसे पूछा जा रहा है कितने ग्राम कार्बन होंगे. 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में हमें नहीं पता कितने ग्राम कार्बन है. तो सिंपल ये एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और जो लेफ्ट होता है उससे डिवाइड करते हैं. तो मीन्स 12 मल्टीप्लाई बाय 8.8 डिवाइड बाय 44. कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आएगा 2.4 ग्राम्स. दैट इज ऑप्शन ए. मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. बट फिर भी अगर आपको ये मेथड डिफिकल्ट लगता है, अगर आपको समझ में नहीं आता, तो मैं एक स्लाइड में दूसरे मेथड से भी सॉल्व करना सिखा रही हूँ. सेकेंड मेथड जिसके जरिए हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं कार्बन का, बट इस मेथड के 3 स्टेप्स हैं. सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, फिर हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे कार्बन के, देन हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ कार्बन. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास. मास हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 8.80 ग्राम. मोलर मास हमने लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट किया था 44. 8.80 को आप डिवाइड करवाओ 44 से, आप कैलकुलेटर से करके चेक कर लो, आपका आंसर आएगा 0.2 मोल. 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 1 मोल ऑफ कार्बन. मीन्स 0.2 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड के, तो 0.2 मोल ही होंगे कार्बन के. हमें मोल्स मिल गया. मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास. मोल्स हमने यहाँ से पुट कर दिए और एटॉमिक मास हमें गिवन था 12. 0.2 को आप मल्टीप्लाई करवाओ 12 से, आपका आंसर आएगा 2.4. आप कैलकुलेटर से चेक कर लो. मीन्स ऑप्शन ए 2.4 grams is the correct answer.
Next question. The values of W, X, Y, and Z in the given chemical equation are W aluminum solid plus X copper sulfate aqueous gives Y copper solid plus Z aluminum sulfate aqueous। मीन्स हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, W, X, Y, Z की वैल्यूज मालूम करनी है। रिएक्टेंट साइड पे एल्यूमिनियम का एक एटम मौजूद है, कॉपर का भी एक एटम मौजूद है, सल्फेट का एक रेडिकल मौजूद है। प्रोडक्ट साइड पे कॉपर का एक एटम है, एल्यूमिनियम के दो एटम है, सल्फेट के तीन रेडिकल्स हैं। मैंने सल्फेट रेडिकल को साथ लिया है, आप चाहो तो सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग भी बैलेंस कर सकते हो। एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए मुझे W को 2 कोफिशिएंट से रिप्लेस करना होगा ताकि एल्यूमिनियम बैलेंस हो जाए। सल्फेट रेडिकल को बैलेंस करने के लिए मुझे X का कोफिशिएंट 3 यूज करना होगा ताकि सल्फेट रेडिकल भी बैलेंस हो जाए। बट जब मैं X की जगह 3 पुट करती हूँ तो कॉपर एटम्स रिएक्टेंट साइड पे 3 हो जाते हैं। तो कॉपर एटम को प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस करने के लिए मैं Y भी 3 यूज करूंगी। हमारे सारे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रिप्रेजेंट करा है। दैट्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप चाहो तो इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते थे। सल्फेट के 3 रेडिकल हैं प्रोडक्ट साइड पे, तो मीन्स रिएक्टेंट साइड पे भी 3 होने चाहिए, मीन्स X इज 3। अगर कॉपर 3 है रिएक्टेंट साइड पे तो प्रोडक्ट साइड पे भी 3 होना चाहिए, मीन्स X और Y हमें मिल गए। एल्यूमिनियम 2 है प्रोडक्ट साइड पे तो रिएक्टेंट साइड पे भी 2 होना चाहिए। ये तीनों करेक्ट है जो ऑप्शन सी रिप्रेजेंट करें। Next question. Which type of chemical reaction is shown in the given equation? H2S gas plus Cl2 gas gives S solid plus 2HCl gas. As you know, a single displacement reaction is a reaction in which one element replaces a similar element in a compound. The general form of a single displacement reaction is A reacts with BC to give AC plus B, means A replace कर रहा है B को। सेम यहाँ पे क्लोरीन रिप्लेस कर रहा है सल्फर को। दैट्स वाई गिवन ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे रिएक्शंस को भी मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है जस्ट बिकॉज ये सारी डेफिनेशंस हमारी कोर्स बुक में नहीं लिखी हुई है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अ combustion reaction is a reaction in which a substance reacts with oxygen gas releasing energy in the form of light and heat. Combustion reactions must involve oxygen as one reactant. Means oxygen का होना as a reactant जरूरी है। Decomposition reaction. A decomposition reaction is a reaction in which a compound breaks down into two or more simpler substances. Means एक compound दो या दो से ज्यादा simpler substances में divide होगा। Double displacement reactions. A double displacement reaction is a reaction in which the positive and negative ions of two ionic compounds exchange places to form two new compound। ये सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बट हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट। मीन्स ऑप्शन सी सिंगल डिस्प्लेसमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्टेंट्स ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर। As you know, a double displacement reaction is a reaction in which the positive and negative ions of two ionic compounds exchange places to form two new compound। That's why given options में से जो correct answer है वो है option B, that is two ionic compounds। The reactants of a double displacement reaction are two ionic compounds, means option B is the correct answer। Next question, which of the following actions will result in a combustion reaction? Combustion reaction. A combustion reaction is a reaction in which a substance reacts with oxygen gas, releasing energy in the form of light and heat. Combustion reactions must involve oxygen as one reactant. When you light a candle, the heat of the flame melts the wax surrounding the wick. The melted wax
vaporizes through a combustion reaction where hydrocarbons interact with oxygen to break into its two components, hydrogen and carbon. This releases light, heat, carbon dioxide and water vapor and fuels the flame. That's why given options में से जो correct answer है वो है option B, that is lighting a scented candle. Means option B, lighting a scented candle is the correct answer. Deuterium and deuterium are atoms of the same element, that is hydrogen. They both have the same 1 atomic mass, 2 atomic number, 3 number of neutrons, 4 number of electrons. ड्यूट्रियम और टाइट्रियम आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। ड्यूट्रियम का एटॉमिक नंबर 1 है और प्रोटॉन नंबर भी 1 है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन है ड्यूट्रियम में और एक न्यूट्रॉन भी है। एटॉमिक मास इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मीन्स 1 + 1 2। टाइट्रियम में एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। एटॉमिक मास इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज 2 + 1 3। तो हमें क्या नजर आ रहा है? एटॉमिक मास डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। मीन्स ऑप्शन 2 और 4 सेम है। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if an element has 3 electrons in its valence m shell, then what will be its atomic number? As you know, first of all, the electrons will go to K shell, which has minimum energy. It can accommodate 2 electrons. After this, electrons will go to L shell, that can accommodate 8 electrons. After this, electrons will go to M shell, that can accommodate 18 electrons. हमसे कहा गया है M शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, M में 18 की गुंजाइश है बट 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। K में 2, L में 8 और M में 3, मीन्स 2 + 8 + 3 = 13, मीन्स एटॉमिक नंबर 13 होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। आप इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहला शेल के होता है, दूसरा एल, तीसरा एम, मीन्स ऑप्शन बी 13 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन नाइट्रोजन आयन? 14 एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 एटॉमिक नंबर को। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, दैट इज 7। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 14 - 7 दैट इज 7, मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 7। -3 चार्ज है, मीन्स नाइट्रोजन के पास 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से। 7 + 3 = 10, जो ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे तीनों करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 7, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next question, the electronic configuration provides information about all of the following features of an atom except the। मैंने इन ऑप्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीशियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2। 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में और 2 इलेक्ट्रॉन्स एम शेल में। फर्स्ट ऑप्शन में हमसे कहा जा रहा है ग्रुप एंड पीरियड की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। यस, बिल्कुल, हम वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैग्नीशियम ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स मैग्नीशियम ग्रुप 2 है या ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। वैलेंस शेल
M है, मीन्स हम बता सकते हैं मैग्नीशियम बिलोंग्स टू पीरियड 3। सेकेंड ऑप्शन में कहा जा रहा है हमें केमिकल बॉन्ड जो वो फॉर्म कर सकता है उसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। यस, हमें पता है मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2। एज यू नो, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 being metals have the tendency to lose their valence electrons, forming positively charged ion. The type of chemical bond which is formed due to complete transfer of electron from one atom to another is called ionic bond. मीन्स हमें ये इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है कि मैग्नीशियम कैन फॉर्म आयनिक बॉन्ड। हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी पता चल जाता है इन डिफरेंट शेल्स, जैसे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 और एम में 2, वो भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मालूम कर सकते हैं। जो चीज़ हमें नहीं मालूम हो सकती वो है ऑप्शन सी, दैट इज presence of neutrons in the nucleus. That's why option C is the correct answer. Next question. According to Rutherford atomic model, the nucleus in an atom is, as you know, according to Rutherford atomic model, the complete rebounds of a few particles show that the nucleus is very dense and hard. Since a few particles were deflected, it shows that the size of the nucleus is very small as compared to the total volume of an atom. ऑप्शन ए में लार्ज इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी में न्यूट्रल, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ऑप्शन डी में लाइट। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दैट इज स्मॉल एंड डेंस। मीन्स ऑप्शन बी, स्मॉल एंड डेंस, इज द करेक्ट आंसर। Next question. In nuclear reactors, the radioactive isotope used to produce energy is, given options में से जो correct answer है वो है option D, that is uranium 235. Uranium 235 is used to produce energy. Means option D is the correct answer. Given are the characteristics of an element X, a salt former, found in liquid state, reddish brown in color, exists as a diatomic molecule. The element X identified is sodium found in solid state, chlorine in gaseous state, bromine in liquid state, beryllium in solid state. रेडिश ब्राउन इन कलर ब्रोमीन का होता है। क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों एग्जिस्ट करते हैं एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रोमीन के, दैट्स ऑप्शन सी, bromine is the correct answer. Next question. The electronic configuration of an element of group 2a and paired 3 is, as you know, all the elements of group 2a have 2 electrons in their valence shell, that is in their outermost shell. Option A, 1s2, 2s1. Valence shell is 2s1. Option A represents the electronic configuration of an element of group 1a and paired 2. Option B is 1s2, 2s2 to p1. Valence shell is 2s2 to p1. Option B represents the electronic configuration of an element of group 3a and period 2. Option C, 1s2, 2s2 to p3. Valence shell is 2s2 to p3. Option C represents the electronic configuration of an element of group 5a and period 2. Option D, 1s2, 2s2 to p6, 3s2. Option D represents the correct answer. Valence shell is 3s2. Option D represents the electronic configuration of an element of group 2a and period 3. Means option D is the correct answer. Next question. With reference to the different groups of the modern periodic table, the information that stands correct is that all the elements in group. Option A, all the elements in group 13 are metals. Incorrect है, boron is metalloid. Option B, all the elements in group 16 form 2 plus cations. Be incorrect है. Elements of group 16 have 6 electrons in their valence shell. They form anions. -2 anions. Option C,
all the elements in group 17 produce basic oxides भी incorrect है. All the elements in group 17 produce acidic oxides. Option D, all the elements in group 18 exist in gaseous state is the correct answer. Group 18 is noble gases. Means option D is the correct answer. All the elements in group 18 exist in gaseous state. Next question. When an atom M combines with another atom X, an ionic bond is formed. In this reaction, the atomic radius of the atom X increases because उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, इसीलिए उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है. अगर उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होते तो उसका रेडियस डिक्रीज होता. दैट्स वाई गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम एम. मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अगर हमसे पूछा गया होता रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता, दैट इज इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू एटम एम. ऑप्शन सी और डी इररेलेवेंट है. The ionic radius of a positive ion is smaller than atomic radius of the element. The ionic radius of a negative ion is larger than the atomic radius of the element. Means option B, it gains electrons from atom M is the correct answer. Next question. The quantity of energy that an isolated gaseous atom in the ground electronic state must absorb to discharge an electron is termed as you know, the ionization energy is the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom. That's why given options में से जो correct answer है वो है option D, that is ionization energy. Means option D, ionization energy is the correct answer. Next question. The given ion is formed from an element belonging to group. As you know, all the elements of group 2A have 2 electrons in their valence shell, that is in their outermost shell. They lose their 2 electrons to form cations with a charge of 2+. 2+ charge है, means given options में से जो correct answer है वो है option A, 2A. Means option A, group 2A is the correct answer. ये वैलेंस शेल नहीं है. वैलेंस शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उसको लूज कर दिया इस एलिमेंट ने, दैट्स वाई इस पे 2+ चार्ज है. मीन्स ऑप्शन ए, ग्रुप 2A इज द करेक्ट आंसर. आपको ऑप्शन डी के साथ कंफ्यूज नहीं होना है. द आयोनिक कंपाउंड whose both ions represent the same electronic configuration as that of neon atom is. नोट में हमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर्स गिवन है. एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर्स. हमें ऐसा आयनिक कंपाउंड शॉर्टलिस्ट करना है जिसके दोनों आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो एज नियॉन एटम. मीन्स उनके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो. नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6. मैग्नीशियम एटम की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2. मैग्नीशियम जब अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो मैग्नीशियम आयन फॉर्म होगा. उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है एज नियॉन एटम. मीन्स मैग्नीशियम इज शॉर्टलिस्टेड. ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4. ऑक्साइड आयन जब फॉर्म होगा मीन्स जब ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा तो ऑक्साइड आयन फॉर्म होंगे और उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, बिल्कुल सेम है नियॉन एटम से. मीन्स ऑक्साइड आयन इज ऑल्सो शॉर्टलिस्टेड. जो ऑप्शन सी रिप्रेजेंट करे मैग्नीशियम आयंस और ऑक्साइड आयंस को शो करे, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. पोटेशियम आयन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. पोटेशियम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो पोटेशियम आयन फॉर्म्ड होगा और पोटेशियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18.
क्लोरीन एटम की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18। पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन से मिलती है, नियॉन से नहीं। हमारे जो आयन्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो है मैग्नीशियम आयन और ऑक्साइड आयन, जो ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these elements will gain an electron to form an anion? As you know, all the elements of group 17 or group 7a have 7 electrons in their valence shell. They will gain an electron to form an anion. क्लोरीन रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप 7a और ग्रुप 17 को, दैट्स ऑप्शन डी क्लोरीन इज द करेक्ट आंसर which will gain an electron to form an anion, that is chloride ion. Boron belongs to group 3a or group 13. Argon belongs to group 18 or group 8a. Lithium belongs to group 1a or group 1. Means option D chlorine is the correct answer. Next question. The table shows information about species P and Q. Species P, Q, number of protons 8, 16, number of neutrons 8, 16, electronic structure 28, 288, means 10 electrons, 18 electrons. Based on the given information, species P and Q are the option A, atoms of inert gases incorrect है, as you know, atomic number and number of protons are same. 8 represent कर रहा है ऑक्सीजन को, 16 represent कर रहा है सल्फर को, और ये दोनों ग्रुप 16 या ग्रुप 6 से बिलोंग करते हैं, इनर्ट गैसेस से, नोबल गैसेस से नहीं। ऑप्शन बी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस भी इनकरेक्ट है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। क्यू में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 16 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, दैट्स ऑप्शन सी नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस इज द करेक्ट आंसर। हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा, इसलिए हमने आइडेंटिफाई किया ऑप्शन सी नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी isotopes of the same element भी incorrect है, as you know isotopes have same atomic number but different mass number, और यहाँ पे क्या है, atomic number different है, that's why option C negatively charged ions is the correct answer. Next question, which of the following statements stands true for the formation of lithium chloride? नोट में हमें लिथियम और क्लोरीन के एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस गिवन है। Lithium atom has only one electron in its valence shell and chlorine atom has 7 electrons in its valence shell. Lithium atom will lose its valence electron and chlorine atom will gain 1 electron. Lithium की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, मीन्स लिथियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, मीन्स क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की नीड है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। लिथियम जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो क्लोरीन गेन करेगा, क्लोरीन एटम क्लोराइड आयन बन जाएगा, लिथियम एटम लिथियम आयन। गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है, जो करेक्टली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है ऑप्शन ए, दैट इज अ लिथियम एटम गिव्स एन इलेक्ट्रॉन टू chlorine atom, means option A is the correct answer. Next question, which set of property and example is true for polar covalent compounds? Option B और D correct property को represent करें, that is electrons are pulled unequally by bonded atoms. Equally pulled नहीं होंगे, unequally pulled होंगे, means option B और D shortlist हो जाएंगे। जो करेक्ट मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप्शन वो है ऑप्शन सी और डी, दैट इज HCl,
हमारे दोनों करेक्ट आंसर ऑप्शन डी में, दैट्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. दैट इज correct property is electrons are pulled unequally by bonded atoms. Example HCl. CCl4 is not an example of polar covalent compounds because the molecule of CCl4, that is carbon tetrachloride, is non-polar in nature because of its symmetrical tetrahedral structure. However, the CCl bond is a polar covalent bond, but the four bonds cancel the polarity of each other and form a non-polar CCl4, that is carbon tetrachloride molecule. ये बॉन्ड पोलर है बट ये चारों बॉन्ड एक दूसरे की पोलैरिटी को कैंसिल करें. ओवरऑल CCl4 इज नॉन पोलर. HCl क्या है? पोलर है. दैट्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A coordinate covalent bond is formed when, as you know, coordinate covalent or dative covalent bonding is a type of covalent bonding in which the bond pair of electrons is donated by one bonded atom only. That's why given options में से जो correct answer है वो है option A, that is one atom shares an electron pair with another atom. Means option A is the correct answer. Next question. Which type of attractive forces are present between iodine I2 molecules? As you know, iodine molecules are non-polar molecules. The force of attraction between non-polar molecules is known as dispersion forces. That's why given options में से जो correct answer है वो है option B, that is dispersion forces. Means option B is the correct answer. The given figure exemplifies the process of सोडियम आयन नजर आ रहा है, क्लोराइड आयन हमें नजर आ रहा है. सोडियम आयन को वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया हुआ है और क्लोराइड आयन को भी वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया हुआ है. इसलिए जो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज डिसोल्यूशन. ऑप्शन ए, डिसोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर. Figure shows dissolution process by the interaction of solvent molecules water with the solute ions, sodium ions and chloride ions. The solvent molecules first pull apart the solute ions and then surround them. In this way, solute dissolves and solution forms. Means option A, dissolution is the correct answer. Next question. Bronze is an alloy consisting of 88% copper and 12% tin. Therefore, it is a solution of. Bronze consists mainly of copper. Copper is the solvent and tin is the solute. The two metals are combined in a hot molten state, but they form a solid solution at room temperature. Copper और tin metal है, दोनों solid है. That's why given options में से जो correct answer है वो है option A, that is solid in solid. Means option A is the correct answer. Next question. A sugar solution is prepared by dissolving 10 gram of sugar in 55 gram of water. The mass percent of solvent in the given solution is. हमसे क्वेश्चन में मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट पूछा गया है, सॉल्यूट नहीं. दो मेथड है जिसके जरिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. आपको जो इजी लगता है आप उससे सॉल्व कर लो. सॉल्यूट का मास 10 ग्राम है, सॉल्वेंट का मास 55 ग्राम है. सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 65. एक मेथड ये, सबसे पहले हम सॉल्यूट की परसेंटेज निकाल लें by mass, that is mass of solute divided by mass of solvent multiplied by 100. Mass of solute is 10 gram, mass of solvent is 65. 10 plus 55, 65 multiplied by 100. आप इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेटर से आपको आंसर मिलेगा 15.38%. ऑप्शन में ये मौजूद है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट ये आंसर नहीं है. ये सॉल्यूट की परसेंटेज है, हमसे सॉल्वेंट की पूछी गई है. हम क्या करेंगे, सॉल्यूट की परसेंटेज को 100 से माइनस कर लेंगे तो हमें सॉल्वेंट की परसेंटेज मिल जाएगी.
सॉल्यूशन की परसेंटेज बराबर होती है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की परसेंटेज। सॉल्यूट की परसेंटेज हमें मिल गई थी, अगर हम उसको 100 से माइनस कर देंगे तो हमें सॉल्वेंट की परसेंटेज मिल जाएगी। मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा मेथड ये कि हम डायरेक्ट ही सॉल्वेंट की परसेंटेज कैलकुलेट करें। कैसे? मास ऑफ सॉल्वेंट 55 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 10 प्लस 55 65 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, आपका आंसर इस मेथड से भी डी ही आएगा। दोनों ही मेथड से आंसर सेम है, आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे सॉल्व करो। जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज 84.62%। मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the given characteristics of the particles of a mixture, large but cannot be seen with naked eyes, big but can pass through the filter paper, quite stable and do not settle down for a long time. The mixture to which these characteristics best fit is, ये सारी characteristics colloids की है। As you know, colloids are solutions in which the solute particles are larger than those present in the true solutions, but not large enough to be seen by naked eye. The particles in such system dissolve and do not settle down for a long time. Given options में जो correctly colloid को represent कर रहा है वो है option B, that is soft leather. Means option B is the correct answer. ऑप्शन ए ट्रू सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करा है, ऑप्शन सी और डी सस्पेंशन को। मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन ग्राफ शोज वेरिएशन इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्ट्स विद टेम्परेचर। द ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ द गिवन ग्राफ इज दैट with the rise in temperature the solubility of temperature in degree centigrade, solubility ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, बट सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो गिवन ऑप्शंस में से करेक्टली ऑप्शन डी रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज potassium nitrate solubility increases while that of sodium chloride shows no change in heat. Means option D is the correct answer. ऑप्शन ए में both salts incorrect है और release of heat भी incorrect है। ऑप्शन बी में कह रहे हैं दोनों salts की solubility increase हो रही है absorption of heat से, incorrect है। सिर्फ potassium nitrate की solubility increase हो रही है absorption of heat से। ऑप्शन सी में कह रहे हैं NaCl की solubility इंक्रीज हो रही है, जो हमें नजर नहीं आ रहा। NaCl की solubility इंक्रीज नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड दैट कैन बी यूज्ड to investigate the presence of different food colors in a beverage is, as you know, chromatography is a process for separating components of a mixture. Beverages mixture, फूड कलर्स क्या है कंपोनेंट्स है। दैट्स वाई गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन chalk is added to water. The particles in this mixture, chalk in water is example of suspension. As you know, suspension is a heterogeneous mixture of undissolved particles in a given medium. Particles are big enough to be seen with naked eye. That's why given option में से जो correct answer है वो है option B, that is settle over time if left undisturbed. Means option B is the correct answer. ऑप्शन ई में कैन नॉट इनकरेक्ट है, हम उनको naked eye से देख सकते हैं। ऑप्शन सी में लेस इनकरेक्ट है, उनका डायमीटर 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू फिल्ट्रेशन भी इनकरेक्ट है, कैन बी सेपरेटेड थ्रू फिल्ट्रेशन। मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द टर्म
ऑक्सीडेशन ऑफ अ सब्सटेंस मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स दोनों लॉस हो रहे हैं ऑक्सीडेशन में और ऑक्सीजन गेन हो रहा है, जो करेक्टली ऑप्शन बी रिप्रेजेंट करा है। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ ऑक्सीजन दोनों इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी में गेन ऑफ हाइड्रोजन इनकरेक्ट है। अगर आपको ये टेबल याद रहता है तो वेल एंड गुड, तो आप ये आसानी से सॉल्व कर लेते, बट जिन स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता और जो ट्रिक मैं यूज़ करती हूँ याद करने के लिए वो ये है, O फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन्स के लिए लियो, L फॉर लॉस, E फॉर इलेक्ट्रॉन, O फॉर ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, दैट इज लियो, जो करेक्टली ऑप्शन बी रिप्रेजेंट करे, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ phosphorus in monosodium phosphate is। हमें फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है इन मोनोसोडियम फोस्फेट, दैट इज Na(H2PO4). सोडियम का एक एटम है, हाइड्रोजन दैट इज H के दो एटम्स है, फोस्फोरस का एक एटम है और ऑक्सीजन के चार एटम्स है। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, क्यों? क्योंकि वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। हाइड्रोजन का +1 है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर उसके तमाम कंपाउंड्स में +1 होता है एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड्स। फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हमको मालूम करना है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तमाम उसके कंपाउंड्स में एक्सेप्ट सुपर ऑक्साइड्स और पर ऑक्साइड्स। 4 2 ज़ा 8, प्लस माइनस माइनस मीन्स -8, 2 1 ज़ा 2 और सोडियम का तो +1 है। +1 +2 इज इक्वल्स टू +3, +3 -8 इज इक्वल्स टू -5, प्लस माइनस माइनस और बड़े नंबर की साइन माइनस है। -5 इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, मीन्स फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +5, जो ऑप्शन डी रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज +5। नेक्स्ट क्वेश्चन, which substance gets reduced when a piece of magnesium is dipped into a copper 2 salt solution। हमें ऐसा सब्सटेंस आइडेंटिफाई करना है जो रिड्यूस्ड हो रहा है। रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मैग्नीशियम को हमने डिप किया है कॉपर 2 सॉल्ट सॉल्यूशन में। मैग्नीशियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे +2 है। मैग्नीशियम एटम्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू मैग्नीशियम आइंस, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है 0 से +2। कॉपर आइंस आर रिड्यूस्ड टू कॉपर एटम्स, ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 हो रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। याद रहे हम रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड स्पीशी हमेशा रिएक्टेंट साइड से आइडेंटिफाई करते हैं, मीन्स ऑप्शन ए और डी शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, बी और सी इनकरेक्ट हो जाते हैं। कॉपर आइंस रिड्यूस्ड हो रहे, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कॉपर आइंस, मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द गिवन सब्सटेंसेस आयरन Fe, FeCl2, FeCl3। The substance or substances that can be used as a reducing agent is /R. As you know, reducing agent is the species that reduces a substance by donating electrons to it. The substance, atom or ion which is oxidized by losing electrons is called reducing agent. Means reducing agent is a substance that oxidizes itself and reduces other. Oxidation state of iron goes from 0 to +3. ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आयरन का 0 है, यहाँ +2 यहाँ +3। रिड्यूसिंग एजेंट्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। आयरन लूज कर सकता है, Fe+2 के स्टेट में भी आयरन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। दैट्स वाई गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Given are the properties of a solution. Solution does not conduct electricity. Solute is dissolved completely. Solute is not dissociated into ions. Based on the given properties, the solution identified is, as you know, the substances which do not ionize in their aqueous solutions and do not allow the current to pass through their solutions are called non-electrolyte. मीन्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट शॉर्टलिस्ट हो जाता. हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉट डिसोसिएटेड इनटू आयन से हमने आइडेंटिफाई किया. नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन सी में वीक इलेक्ट्रोलाइट और ऑप्शन डी में अगेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इनकरेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. During the manufacturing process of caustic soda in Nelson's cell, the byproduct that is obtained at anode is /R. Given options में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज क्लोरीन गैस. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. As you know, the chloride ions are oxidized to give chlorine gas at the anode. Anode is positive electrode. Chloride ions are anions, that is negatively charged ion. आप इस तरह याद रख सकते हो, एन ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन एट एनोड, रेड कैट मीन्स रिडक्शन एट कैथोड. नेगेटिवली चार्ज आयन है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, दैट इज लियो. नेगेटिवली चार्ज आयन लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन और वो ऑक्सीडाइज होंगे कहाँ पर, एनोड पे. मीन्स क्लोरीन हमें मिलेगी एट एनोड. दैट्स व्हाई ऑप्शन ए, क्लोरीन गैस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म rusting refers to the corrosion of, as you know, corrosion is slow and continuous eating away of a metal by the surrounding medium. Corrosion is a general term but corrosion of iron is called rusting. That's why given options में से जो correct answer है वो है option A, that is iron. Rusting refers to the corrosion of iron, means option A is the correct answer. Alternate to practical ATP. A student used solvent X to separate a mixture of salt and sugar because sugar is soluble in X while salt is not. Based on this information, the solvent X used by the student is. Water cannot be used to separate a mixture of sugar and salt as both sugar and salt show very good solubility in water. However, salt being an ionic compound would not be soluble in alcohol, like dissolved slag. On the other hand, sugar is very much soluble in alcohol, for example, ethanol. So, on dissolving the mixture of sugar and salt in ethanol, the sugar would dissolve in ethanol, but salt would remain undissolved. The undissolved salt will settle at the bottom and can simply be separated by filtration. Now the solution of sugar and alcohol can simply be evaporated over a water bath and the sugar can thus be separated from the ethanol solution. That's why given options में से जो correct answer है वो है option C, that is ethanol. Sugar is soluble in ethanol while salt is not. That's why option C, ethanol is the correct answer. Next question. In a science laboratory, Mariam prepared a mixture of sand and salt in water. She then applied the process of filtration on the mixture. An inference Mariam must have made through this experiment is that silicon dioxide is sand, potassium sulfate dot aluminium sulfate dot 24H2O is potash alum or salt. Salt is water soluble while sand is not. This means in mixture, salt will dissolve and the sand will not dissolve and sand will settle down in water. In filtration process, sand will not pass through filter paper. That's why given options में से जो correct answer है वो है option A, that is
सेंट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। ऑप्शन बी में इजीली पासेस इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी में एमोर्फस और ऑप्शन डी में सेटल्स डाउन। सेंट फिल्टर पेपर से पास नहीं होगी। पोटेश एलम इज क्रिस्टलाइन सॉलिड और सॉल्ट वाटर सॉल्यूबल है, इसलिए सेटल डाउन नहीं होगी, डिसॉल्व हो जाएगी। सेंट settles down in water. That's why option A is the correct answer. Next question. A student accidentally dropped some iron fillings in a bottle of sodium chloride. Which step or steps should he/she follow to remove the iron fillings? As you know, iron is magnetic and salt is not magnetic, which means a magnet could be used to attract the iron fillings out of mixture, leaving the salt that is sodium chloride. That's why given options में से जो correct answer है वो है option A, that is use a magnet only. Magnet will attract iron fillings. That's why option A, use a magnet only is the correct answer. Next question. When sucrose is dissolved in water, its solubility increases with the rising temperature because sucrose, given options में से जो correct answer है वो है option C, that is sucrose absorbs heat from the water. Option C is the correct answer. As you know, solubility increases with the increasing temperature. It means that heat is required to break the attractive forces. This requirement is fulfilled by the surrounding molecules. Surrounding molecules water है. That's the option C is the correct answer. हमें सिचुएशन गिवन है उसमें solubility increase हो रही है with the rising temperature. That's the option C is the correct answer. अगर हमसे पूछा गया होता solubility decrease हो रही है with the rising temperature तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होता। हमारी सिचुएशन में ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सैलिक एसिड इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस बिकॉज ऑफ इट्स हाई, गिवन ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज स्टेबिलिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एज यू नो, a primary standard is a reagent that is extremely pure, stable, has no water of hydration, and has a high molecular weight. Some primary standards are sodium carbonate, potassium hydrogen iodide, potassium dichromate, oxalic acid, etc. That's option B, stability is the correct answer. Next question. In a laboratory, Altamsh is provided with a 250 ml volumetric flask to prepare 0.1 molar oxalic acid solution. How much mass of oxalic acid, that is H2C2O4.2H2O, does he require to accomplish his task? नोट में हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस गिवन है। हमसे मास पूछा गया ऑक्सैलिक एसिड का। फॉर्मूला इज मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलैरिटी हमें गिवन है 0.1 मोलर, वॉल्यूम भी हमें गिवन है बट ml में गिवन है। हमें किस में चाहिए, डीएम क्यूब या लीटर में। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम 250 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा डीएम क्यूब में या लीटर में। मोलर मास हमें गिवन नहीं है बट हमें एटॉमिक मासेस गिवन है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे मोलर मास। सबसे पहले तो हम एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, मीन्स 3 एलिमेंट्स हैं। कार्बन के कितने आइटम्स हैं, 2, हाइड्रोजन के 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, मीन्स टोटल 4 + 2 6, ऑक्सीजन के 4 और 2, 4 + 2 6, टोटल 6 आइटम्स है ऑक्सीजन के, 6 हाइड्रोजन के और 2 कार्बन के। एटॉमिक मासेस हमें गिवन है बट हमें याद भी होने चाहिए। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। नंबर ऑफ एटम्स और एटॉमिक मासेस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 12 इज 24, 6 × 1 इज 6, 6 × 16 इज 96,
फिर हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें मोलर मास मिल जाएगा, दैट इज़ 126। सारी वैल्यूज़ को हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, आप कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आएगा 3.15 ग्राम, दैट इज ऑप्शन बी, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये एक मेथड है और एक और मेथड है जिसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करती हूँ। सेकेंड मेथड टू कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज, सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, देन मास। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स इज मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी हमें गिवन है 0.1 मोलर, वॉल्यूम भी गिवन है बट ml में गिवन है, हम इसे डिवाइड बाय 1000 करेंगे ताकि हमें वॉल्यूम मिल जाए डीएम क्यूब में या लीटर में, दैट इज 0.25 डीएम क्यूब। मोलैरिटी को वॉल्यूम से आप मल्टीप्लाई करवा लो कैलकुलेटर से, हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, दैट इज 0.025 मोल। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स मैंने यहाँ से पुट कर दिए, मोलर मास मैंने कैलकुलेट करना आपको लास्ट स्लाइड में सिखाया, जो मैंने यहाँ से पुट कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करवा लिया मोलर मास से, हमें आंसर मिल गया, दैट इज 3.15 ग्राम। दोनों ही मेथड से आंसर सेम है, दैट इज बी, 3.15 ग्राम, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Use the given information to answer question 47 and question 48. The following steps are ensured when preparing crystals of pure copper sulfate CuSO4.5H2O from an impure sample of blue vitriol. A few drops of dilute sulfuric acid are added to the aqueous solution of sample. The filtrate should be evaporated only up to the crystallization point. Next question. The purpose of adding dilute sulfuric acid is to copper sulfate tends to form a complex with water by hydrolysis, hence to prevent that a small amount of sulfuric acid is added. That's why given options में से जो correct answer है वो है option B, that is prevent the hydrolysis of copper sulfate, means option B is the correct answer. Next question. If heating is exceeded beyond the crystallization point to dryness, then this causes 1. Disappearance of blue color, 2. Loss of water crystallization, 3. Disappearance of the compound, 4. Loss of turbidity from the solution. When copper sulfate pentahydrate is heated beyond the crystallization point, it loses water of crystallization as a result of evaporation. Losing water of crystallization turns hydrated copper sulfate into anhydrous copper sulfate salt, means ब्लू कलर डिसअपियर होगा और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्टली दोनों स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 and 2, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. Electroplating is a redox reaction that is performed to prevent iron from corrosion. Considering this information, all of the following statements are true except that this process involves the स्टेटमेंट ए सी डी ट्रू स्टेटमेंट है, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करते हैं, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए सी डी आर ट्रू स्टेटमेंट्स, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन रिएक्टेंट्स, use of electrical energy to initiate the reaction, electrolyte of the same metal being coated on iron. Option B is not true for electrolytic cell. Salt bridge हम galvanic cell में use करते हैं. As you know, galvanic cell consists of two half cells connected through a salt bridge. That's why option B is the correct answer. That is use of a salt bridge for the migration of ions. Means option B is the correct answer. Next question. Consider the given table. Electrolytic cell, observation of bulb, X no light, Y dim light, Z bright light. Based on the given observations, the electrolyte that would be most likely present in the electrolytic cells X, Y and Z are X no light. No light means solution is non-electrolyte.
Non-electrolytes do not ionize in their aqueous solutions and do not allow the current to pass through their solutions. मीन्स शुगर और इथेनॉल शॉर्टलिस्ट हो जाते, जो एग्जाम्पल्स है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की. Why a dim light? Dim light means solution is weak electrolyte. Weak electrolytes ionize to a small extent when dissolved in water and could not produce more ions. एसिटिक एसिड शॉर्टलिस्ट हो जाता, जो एग्जाम्पल है वीक इलेक्ट्रोलाइट की. अब ब्राइट लाइट. ब्राइट लाइट मीन्स द सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. Strong electrolytes ionize almost completely in their aqueous solutions and produce more ions. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड शॉर्टलिस्ट हो जाते. ऑप्शन डी तीनों करेक्ट आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. दैट इज एक्स इज इथेनॉल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वाई इज एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट, Z is potassium chloride. Strong electrolyte means option D is the correct answer.